Assalamu alaikum. In previous lecture you have seen the definition of chickenpox and the clinical manifestations. जो इसकी clinical manifestations है that was found in two stages. First one was the prodromal stage, second one was the eruptive stage. उसके बाद आप लोगों ने देखा था in eruptive stage में rashes appear हो जाते हैं. Distribution of rash कैसे होता है? Now the evolution, rapid evolution. जो ये rashes है it advances quickly through the stages of firstly आते हैं मैक्यूल के बाद फिर आते हैं पैप्यूल. After papule there is the formation of vesicle, and vesicle then leads to the formation of scale. These are the stages of evolution. ये stages है rashes के. फर्स्टली कौन से आते हैं? मैक्यूल्स आते हैं. मैक्यूल्स हम किनको बोलते हैं? मैक्यूल्स में सिर्फ स्किन का कलर चेंज होता है. चेंज इन कलर ऑफ स्किन. देयर इज नाइदर डिप्रेशन नॉर एलिवेटेड फॉर्म. ना ही यहाँ पे कोई स्किन में कोई रेजर फॉर्म होती है, ना ही डिप्रेशन आता है. सिंपली इसमें क्या आता है? मैक्यूल में सिर्फ आता है चेंज इन कलर ऑफ स्किन. उसके बाद मैक्यूल जो है ये ग्रो हो जाते हैं, ये बनाते हैं पैप्यूल्स. पैप्यूल्स हम किनको बोलते हैं? पैप्यूल्स जो है दैट आर सॉलिड राउंडेड इनवेटेड फॉर्म ऑफ स्किन. पैप्यूल जो है ये सॉलिड होते हैं, राउंडेड एलिवेटेड फॉर्म ऑफ स्किन होते हैं, आल्सो नोन एज पिंपल. छोटे छोटे दाने फिर आते हैं. उसके बाद पैप्यूल्स के बाद फिर अनदर स्टेज आता है दैट इज द वेसिकल. वेसिकल्स हम किनको बोलते हैं? वेसिकल्स होते हैं दे आर द ब्लिस्टर्स एज ऑन स्किन. ब्लिस्टर्स एज ऑन स्किन आर नोन एज द वेसिकल्स. बट जो ये वेसिकल्स होते हैं ये फिल्ड होते हैं विद क्लियर फ्लूइड से. These get filled with clear fluid. They look like dewdrops. Vesicles does not go through the pustular stage. Vesicles directly फिर बनाते हैं scape. There is the formation of scape, or also known as there is crust formation होती है वहाँ पे. पहले क्या होता है रैशेस में? चेंज इन द कलर ऑफ स्किन. उसके बाद फिर छोटे छोटे दाने निकलते हैं, दैट इज नोन एज द पैप्यूलर स्टेज. उसके बाद ब्लिस्टर्स डेवलप हो जाते हैं ऑन द स्किन, नोन एज द वेसिकल स्टेज आता है. उसके बाद वेसिकल के बाद फिर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्केप और आल्सो नोन एज क्रस्ट फॉर्मेशन. बट जो ये स्केप है, स्केपिंग बिगिनस 4 to 7 days. स्केपिंग कब स्टार्ट हो जाती है? आफ्टर वेसिकल 4 to 7 days after the rash appears. This is the evolution of rash. Now the complications. What are the complications of chickenpox? In most cases chickenpox जो है that is a mild self-limiting disease. However, जो chickenpox है that may be accompanied by severe complications, particularly ये ज़्यादा किन में हो जाती है? जो immunosuppressive patients होती है, and may also occur in normal children and adults. कौन कौन सी complications आते हैं? These includes hemorrhage, pneumonia, cerebral ataxia, encephalitis,
Maternal varicella during pregnancy may cause fetal wastage, and birth defects, birth defects, and LBW, etc. These are the complications of chickenpox. क्या क्या हो सकता है? Hemorrhage, pneumonia, cerebral ataxia, encephalitis. ये जो ये फीटल वेस्टेज है, ये किसकी वजह से होता है? मैटरनल वारिसिला, जब मदर को होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, मदर को होगा चिकन पॉक्स, तो इसकी वजह से फीटल वेस्टेज हो सकता है और बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं और लो बर्थ वेट बेबी जो है वो बॉर्न हो सकते हैं. दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ चिकन पॉक्स. Now the treatment. In treatment कैसे किया जाता है चिकन पॉक्स का? Antihistamines are prescribed, or antihistamine drugs are prescribed to control itching. For itching के लिए antihistamine drugs दिए जाते हैं, किस लिए? For itching के लिए. पेशेंट में सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं. सेकेंडरी इन्फेक्शंस that may be treated with antibiotics. प्रिवेंशन में क्या दिया जाता है? इन प्रिवेंशन वरिसला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन. varicella zoster immunoglobulin VZIG. varicella zoster immunoglobulin is given within, कब दिए जाते हैं? Within 72 hours of exposure has been recommended for prevention of chickenpox. Particularly किन में दिया जाता है? VZIG, varicella zoster immunoglobulin, जो immunosuppressed persons होते हैं. Also वैक्सीन भी दिया जाता है. कौन सा वैक्सीन? लाइव एटेन्यूएटेड varicella वैक्सीन. एक लाइव एटेन्यूएटेड varicella वैक्सीन जो है वो दिया जाता है. दैट इज सेफ एंड करंटली रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन जो होते हैं 12 to 18 months of age की. 18 months of age. This is the treatment. Now the management. How can we manage? Firstly, as you know, it is a communicable disease. So the first point is the important point, that is the strict isolation. Strict isolation. Strict isolation should be practiced to prevent the spread of infection. पेशेंट को स्ट्रिक्टली आइसोलेट करना होता है to prevent the spread of infection. Next point is the care of skin. केयर ऑफ स्किन. केयर ऑफ स्किन में क्या देना होता है? जो पेशेंट होते हैं इनको इचिंग होती है. जब पेशेंट इचिंग करते हैं तो इसकी वजह से स्क्रैचिंग होती है, बॉडी में स्क्रैचिंग होती है. दैट स्क्रैचिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग फिंगर स्टाल्स.
Scratching can be prevented by using finger stalls. Also जो स्किन होती है वो क्लीन रखनी होती है with a weak solution of potassium permanganate. It's a weak solution. The skin should be cleaned with a weak solution of potassium permanganate. Another point is the respiratory difficulties. Respiratory difficulties can be treated with warm and humidified oxygen. पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होती है दैट में बी ट्रीटेड उनको ट्रीट किया जाता है विद वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन से. पेशेंट को पोजीशन देनी होती है टू प्रिवेंट द किस लिए पोजीशनिंग पेशेंट को देनी होती है टू प्रिवेंट चेस्ट कंजेशन ताकि चेस्ट कंजेशन ना रहे and hypostatic pneumonia. In addition to this, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो मेंटेन रखना होता है. जो इसके न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं जो इस पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करना होता है. Nutritional needs can be satisfied by providing high protein. Nutritional needs can be satisfied by providing high protein and high caloric diet. The food should also consist of easily digestible, well-cooked diet. Another point is the hygiene. This is the important one. Patient का hygiene maintain रखना होता है. Daily sponge with gentle touch can be done using weak solution of potassium magnate. In also oral hygiene भी maintain रखना होता है. Mouth care भी देना होता है patient को. The eyes should be cleaned and eye drops can be used prescribed by the doctor. This all includes in the hygiene. Thank you.